Viewers, morning. Welcome. This is Because English classes. Today, the topic is Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. This is the first poem, first year, Science, Arts and Commerce. Let me first introduce the poet. The poet is Robert Frost, an American poet. He was born on 26th March 1874 in San Francisco, America, and he died 29th January 1963. Robert Frost, as a poet, he is famous for his own style, his other creations, the other poems that make Robert Frost famous all over the world, and especially in America. The Gift of Outright, one poem, Gift of Outright. Second poem, The Road Not Taken, and Nothing Gold Can Stay. Besides, the present poem, Stopping by the Woods, is also one of his important poems. Let me first tell you the poetic style. The poetic style of the poet in this poem. The poetic style is realistic. What does it mean it? Realistic mane hela, the poet advises the readers not to be carried away by the external attractions, by the material attractions. Rather, the readers should be realistic because life is full of action. Life is real. Life is practical. So his poetic style is realistic. Rural means the poet. Describes the narrator. He lives in rural area. He is a countryside man, and most probably he is a farmer, and he rides a horse. Second is introspective. What is introspective? The poetic style is introspective. Introspective means what we realize in our mental state, right? This is abstract. This we have to feel the poem in our psycho level, right? Then a rhyming scheme. Rhyming scheme is A B A, B B C D, C C D C, D D D D. Then tone of the poet. One question is in your exercise: what is the tone of the poet in the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening? The tone of the poet is serene, santa, calm, quiet, tranquil, right? This is the tone of the poet. Setting. Setting means the background of the poem is this is a countryside area, a rural area, Gramanchala, snowy evening. This is the winter season. This is the background of the poem, right? Dear viewers, this poem is famous in America for its classical and allegorical meaning. Allegorical meaning means the poem has something in its inner meaning and it displays something outer meaning, right? For example, the characters in this poem, one is the owner of the woods, second is the narrator, third is a horse. They are not, it is not merely a horse. Or owner of the woods not a person the poet is talking up. What a location है. The owner of the forest, he is the symbolic of the modern man. ए होची आधुनिक मनीष ପାଇଁ का सेटा का symbol. Who is drowned in materialism. जे कि वस्तुवाद दुनिया रे बुड़ी रही. He is quite indifferent to natural beauty. से जो प्राकृतिक सौंदर्य प्रति तार कोनोची ध्यान धारणा रहुची. Right. Narrator is a common man. He is a lame man. He is an ordinary man. And I was telling you, he is most probably a farmer. The poet wants to say tell the readers that we the common people, what do you do? We are attracted by the external attractions. For example, the lovely wood, lovely deep wood,
This is the outside meaning, the ghancha aranya, ghancha jangala, barafavruta jangala. But this deep dark forest is the symbol of the attractions of the material world, right? We shouldn't be carried away. We shouldn't be attracted. We shouldn't be emotional. We shouldn't be distracted from the reality of life, right? And the next part of this poem, I want to tell you. This poem, you can understand it right now through discussion. When line by line we will discuss. Lovely dark forest is the symbol of material attraction, right? So the poet in his through this poem advises the readers that life is real. We should not be distracted. We shouldn't be aberrated from reality by being attracted by the external elements. So let me start the poem line by line. Whose woods are these? I think no. I think no means the poet is not sure whose woods is this. एक जंगलटा कहार कवि क्लियर नुहति, सो ही टेल्स आई थिंक आई नो, नलते से लिखिथांता आई नो. हिज हाउस इन द विलेज दो, जदिओ ता घरटा होछि गाँ रे. ही विल नॉट सी मी, से मते देखु नथिबो. स्टॉपिंग हियर, ए जगह मु रही थिबार. टू वॉच वुड्स फिल अप विथ स्नो, बरफरे आवृत होइथिबा ता जंगल, सौंदर्य भरा जंगल को मु रही अटकी उपभोग करुछि. ए जंगलर मालिक जे गाँ रोचे से कथा भी जानी पार न. डियर व्यूअर्स, वन क्वेश्चन इज देयर इन योर एक्सरसाइज. व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द ओनर ऑफ द फॉरेस्ट और ओनर ऑफ द वुड्स टुवर्ड्स नेचुरल ब्यूटी? गोटे प्रश्न अच्छी जो पार आसो जे जो ओनर ऑफ द से जो जंगलर जे मालिक तार प्राकृतिक सौंदर्य प्रति रिएक्शन कौन, प्रतिक्रिया कौन? मु बारंबार कही आसुछि, दिस पोएम इज वेरी एलिगोरिकल बाय नेचर. आर अर्थ गोटे आड़े जाऊँ, बाहर को जना पड़े गोटे, तार भितर अर्थ गोटे. हियर वी कैन राइट दैट आंसर. द ओनर ऑफ द फॉरेस्ट रेफर्स टू द मॉडर्न मैन हु इज ड्राउन्ड, जे डूबी जाइछि इन द मटेरियलिज्म, वस्तुवाद दुनिया रे. ही इज क्वाइट इंडिफरेंट टू ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृतिर जो सौंदर्य अच्छी ता प्रति से उदासीन अच्छे, राइट? देन second stanza, my little horse must think it queer. Here the little horse, why does the poet say it is little horse? Little horse can be one meaning, very loving horse, dear horse. In other meaning, the horse can be little like pony, you know, छोट छोट घोड़ा pony को आजे, pony भी ही पारे था. To stop without a farmhouse, my little horse must think it queer. Queer means strange, अद्भुत. Narrator कहउछन्ती जे मो घोड़ाटी मोर एटी अटकी जावाटा निश्चिंत अद्भुत मन करुथिबो. से भाबुथिबो मु काहे केटी अटकिले. इट इज गेटिंग सरप्राइज, तब आश्चर्य लागुछि काहे ये मोर मास्टर एटी काहे अटकी गले. टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, एटी तो फार्म हाउस नाही, ताले कोन पई सिटी अटकिले. व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ फार्म हाउस? जनरली इन दोज डेज व्हेन द हॉर्स राइडर्स वर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस on the way, some private persons, they were having their farmhouses where a horse can take food and the rider can take food and rest there. So generally the horse is acquainted. आमर जो घोड़ाटे कथा से कहते घोड़ाटी परिचित जे जनरली साधारणतः घोड़ा मालिक घोड़ा चढ़ाली माने हॉर्स राइडर्स दे स्टॉप नियर ए फार्म हाउस. बट द हॉर्स, ये जो घोड़ाटी नरेटर करो ये देखुची तो कोड़ा फार्म हाउस नहीं, इठी तले कौन पाई अटकिले. सो इट गेट्स सरप्राइज्ड एंड थिंक्स इट क्वियर और स्ट्रेंज. ए कथाटू से अद्भुत भावुची एवं निजुक निजे आश्चर्य हो जाउछि. कहीं ठिया होइछन्ति तले कवि कोठी ठिया होइछन्ति? नरेटर द नरेटर इज स्टैंडिंग बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक. वुड्स माने जंगल, फ्रोजन लेक माने बरफ पलटि जाइथिबा जो लेक हृद तार पानी बरफ पलटि जाइछि. से बरफ पलटि जाइथिबा गोटे हृद एपटे रहिछि जंगल, मझिरे ठिया होइछन्ति द नरेटर. एंड इट इज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. Dear student, but a question is, what does the expression mean darkest evening of the year? Darkest evening of the year in one meaning can refer to the darkest, the longest night of the year, right? In other meaning, darkest evening of the year also refers to the depressing, the desperating, the hopelessness of the narrator or the modern man
ओके एटा होची गोटे हताश भावना गोटे निराश भावना गोटे हतोत्साहित भावना को बुझाऊँ ए अर्थ रे allegorical meaning रे he gives his harness bell a shake it horse to mu kahichi it's not actually horse means it is the type of a person who are not able to understand the mystery of the world or mystery of this universe ए जो विश्व ए जगत रहस्य को जो लोक माने बुझी पारनाती so here symbol is horse we can say horse nature and generally those persons who fail to understand जो लोक माने बुझीबा को अक्षम होती the mystery of the universe ए दुनियार जो रहस्य समाज रहस्य बुझी न पारती they generally raise their head से मुंडटा को ऊपर को टेकंती they open their eyes wide आखिटा उटे बड़ बड़ कर दियंती जतले से बुझी न पारती similarly the horse here sex is harness bell what is harness bell means the bell which is fitted to the neck of a horse घोड़ार बेकरे गोटे घंटी लगी था घोड़ा यात्रा करे से घंटा टन 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 कर बाजे दी हॉर्स आज इज सरप्राइज घोड़ाटी जेहेतु आश्चर्य होती इट सेक्स इट्स बेल यार बजाऊँ तार घंटीटा बजाऊँ व्हाई टू आस्क इट्स मास्टर तार मालिक को पचार इफ देयर वाज एनी मिस्टेक किसी भूल है कि आज्ञा दी ओनली अदर साउंड इज द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड ए डाउनी फ्लैग नरेटर कहते से जो जगहटा बहुत काम थिला क्वाइट थिला सेरिन थिला ट्रांक्विल भी थिला बहुत शांत निस्तब्ध निर्जन स्थानटा थिला किंतु सेट किछि साउंड थिला केतरा साउंड थिला गोटे क्वेश्चन अछि पछपटे व्हाट आर द डिफरेंट साउंड्स दैट द पोएट डिस्क्राइब्स कवि को साउंड कथा से आलोचना करछन जो कविता रे आमे करबा तीनटा साउंड कथा से कहछथि वन साउंड इज हार्नेस बेल ऑफ द हॉर्स घोड़ाटा जो टन टन शब्दटा गोटे साउंड द्वितीय साउंड स्वीपिंग साउंड ऑफ विंड पवन रो साई साई शब्दटा थिला एंड डाउनी फ्लैग व्हाट इज डाउनी फ्लैग डाउनी मीन्स द पीस ऑफ स्नो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री डाउन इट मेक्स ए साउंड जते बरफटी खंडे गछ ऊपर तळको पड़ी जाए ए गोटे साउंड करे सो दिस इज कॉल्ड द डाउनी फ्लैग यार किछ साउंड थिला सो देयर वर मेनली थ्री साउंड्स द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप कहउछंदी ए जो जंगल बहुत सुंदर डार्क एंड डीप बहुत सुंदर थिला अंधार थिला एवं घंच थिला डीप थिला गभीरिया थिला बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप पोएट मेरे कहया कथा ही हैड बीन इम्प्रेस्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द प्लेस से स्थानर सौंदर्य द्वारा से बहुत आकर्षित हो सारी ही डिडंट वांट टू लीव द प्लेस से चाहू नतले से जगहटा से छाड़ी कर जिबाकू ही वांटेड टू स्टे देयर फॉर मोर टाइम एंड एंजॉय द ब्यूटी टिल ही वाज सैटिस्फाइड पूरा संतुष्ट हैला पर्यंत सेठी रही कि सौंदर्य उपभोग करता इच्छा थिला बट अगेंस्ट एज व्हिल इच्छा विरुद्ध रे ही डिसाइड्स टू लीव द प्लेस व्हाई काई से स्थान छाड़ी इच्छा करूछन निष्पत्ति नउछन बिकॉज़ ही हैज गिवन वर्ड्स टू समबडी व्हिच ही मस्ट कीप बिफोर स्लीप से किछि लोक को आउ कहार को जवाब देइछंती किछि कथा देइछंती जोटा से सोइला पूर्व रक्षा करिवे जदि सेठी रहि जिवे तो सेठी पहुंची परिबेनी प्रॉमिस रखि परिबेनी एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप मत माइल माइल रास्ता यात्रा करियर अछि बिफोर आई स्लीप मो सोइबा पूर्व एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप रिपीट इज स्लीप गुडा कट सो दिस लास्ट पारा इज वेरी फिलोसॉफिकल इज वेरी एलेगोरिकल बाय नेचर जो वुड्स लवली डार्क एंड डीप दिस इज द सिंबल ऑफ मटेरियल अट्रैक्शन ये हला वस्तुवादी दुनियार आकर्षण एंड दिस बिकम्स ए प्रॉब्लम विथ द कॉमन मैन that most often he gets distracted he gets attracted से आकर्षित हुए एवं पथभ्रष्ट हुए कविंकर कहवा कथा रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहवा कथा जे आमे एई जो बाह्य चकचाक्य रे आकर्षित होइकिरी सब जगह जीवन रो समय दबा उचित न बा पथच्युत होबा उचित न कारण we have our life is full of action our work field of work is broad the action of our life is very wide broad आम जीवन रो काम गुड़ाक बहुत विस्तृत आमको से काम करिया को पड़िबो राइट काम को काम ना मैन हैज टू रेंडर ड्यूटी मनुष्य को काम करिया पड़िबो टुवर्ड्स हिज फैमिली टुवर्ड्स हिमसेल्फ टुवर्ड्स सोसाइटी समाज पई परिवार पई निज पई काम करिया बहुत काम अछि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एटी स्लीप अर्थ होछि निद्रा नो एटी स्लीप अर्थ होछि डेथ पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज क्वाइट फिलोसॉफिकल मु कहिछि से बहुत एलेगोरिकली कथा कहती बाहर अर्थ गोटे अलग गोटे कथा शोवा पूर्व मत बहुत यात्रा अतिक्रम कर अर्थ है
ମରିବା ପୂର୍ବରୁ so many actions, so many duties, so many activities a person has to do. ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବହୁତ ବହୁତ କାମ କରିବାର ତାର ଅଛି ସମାଜ ପ୍ରତି ତା ପାଇଁ ତା ପରିବାର ପାଇଁ, right? So please viewers, thank you so much, and again I thank you that for your nice cooperation and liking and subscribe my video has pushed my channel up. So I am very thankful to you. So please again, if you are new, please subscribe and like my video.